interesting topic that is called as application of stack. Application of stack. Now, where stack is used? Generally, stack is used for expression conversion, expression evaluation, then parsing of the expression, simulation of recursion, and function call. Okay, the part simulation of recursion we are going to learn at the end of this unit. First application is expression evaluation. If you know, there are three types of expressions. Three types of expression: infix expression, prefix expression, postfix expression. Yes. So these three expressions, whenever we want to evaluate, at that time stack is used. Second one, conversion of the expression. Means if there is a need that I want to convert expression from infix to prefix, infix to postfix, or postfix to prefix, then such type of conversion can also be done with the help of stack. So expression conversion, expression evaluation, then parsing of the expression. Parsing means the parsing is done at the back end. Back end means आपके कंप्यूटर में ये पार्सिंग होता रहता है. हम जब प्रोग्राम कंपाइल करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये पार्सिंग कैसी होती है पता नहीं चलता. यू विल स्टडी इट इन थर्ड ईयर. यस, बट दैट parsing is done with the help of stack. Then simulation of recursion and function call. Okay, so all are nothing but the application of the stack. Then first of all we'll see the expressions. First expression I am writing a plus b. So this is which form of expression? Can anybody tell? Called as infix expression. Infix. Yes, infix, because operator is in between the operands. Here A and B are called as operands and this plus is called as operator. This is prefix form. Operator comes before operands. That's why it is prefix. And here operator comes after operation. That's why it is called as postfix form of expression. Okay. Now we'll see whenever we want to evaluate that, how to evaluate the expressions. So for example, plus 5 into 3 and 2. Now this is prefix form of expression. I want to evaluate this expression. So how I will evaluate? As operator is first. Yes, this is prefix form of operation. So you should start from right to left. Yes, prefix है, right to left scan करो. So क्या है right to left? These are two operands. Yes. So what we want to do, first of all, see which is the first operator from right to left. Which is first operator? That is multiplication. So perform the multiplication operation on these two operands. So 3 multiplied by 2 is nothing but the 6. Yes. Then again go from right to left. Now this is the operator, that is plus operator. So perform addition on these two operands. So the result comes to be 11. This is related to prefix operator. Now postfix. So example, same example we can take 5, 3, 2, multiplication and plus. ये किसका फॉर्म है? इसी का postfix फॉर्म है. Okay. Now this is postfix form. So start scanning from left to right.
So from left to right, which is the first operator? This one. Yes. So perform this operation on these two immediate operands. So 5, 3 multiplied by 2, 6 and plus. Again from whenever you will move from left to right, now this is the operator. So perform the operation on these two operands. So again result comes to be 11. Yes, this is how prefix and postfix expression will be evaluated. Now this is manual evaluation. Yes. Now we will see how this expression is evaluated using stack. But before moving to the stack, what is the advantage of this or evaluating the expressions using stack? क्या आप लोग बताओगे? Voice is not clear. See, first of all, advantage of prefix and postfix expression over infix. Suppose I am writing 5 plus 3 into 2. Suppose this is my infix expression. Now, what you have to do here, in infix operation, you have to first of all see the precedence of the operator. Yes. Now, multiplication is having higher precedence than addition. Yes. So, what you have to do, scan the whole expression. From that whole expression, which is the operator having higher precedence, then perform that operation first. Again, if there are opening and closing bracket, then it becomes little bit difficult. For example, if I am putting now here, this operator is having precedence. So what we will do, we will first of all perform multiplication on 3 and 2. Then we'll perform addition. But if I am writing in this way, then meaning is that first of all we have to perform this addition and then we have to perform this multiplication because now brackets are added. So in infix expression, we have to first of all see the operator precedence. But in prefix and postfix expression, there is no need to first of all see the operator precedence. First of all, right way, just in prefix, scan from left to right, which is first operator, perform operation. Then go for next operator. Don't see any precedence. अगर यहाँ पर instead of multiplication, addition operator is there and here multiplication is there, then also first precedence will first which operation will be performed? Addition perform होता पहले. Yes. So these are the advantages of prefix and postfix expression. Yes. Now, yes. Do you have any query? Okay. Now, first is evaluation of postfix expression. Evaluation of postfix expression. Okay. Now, I will take one expression. Now this is my expression. I want to evaluate this expression with the help of stack. So here I will draw stack also. Okay.
Initially my stack is empty. Now next what I will do, it's a postfix expression. So from where I will start scanning? postfix expression के लिए scanning कहाँ से होगा? Left to right. Right. Yes. Why? One reason कि postfix में right side में सारे operators होते हैं and left side में सारे operands होते हैं. Whenever we want to perform some operation, operands are must. अगर हम right से scan करेंगे तो सारे operators ही मिलेंगे ना हमें. ये सारे ऑपरेटर्स देन यहाँ पे जाके ऑपरेंड मिलेंगे. यस. तो जहां से पहले ऑपरेंड मिलता है वहां से नेक्स्ट साइड की तरफ स्कैनिंग करनी चाहिए. सो यहाँ से ऑपरेंड है, सो we'll start scanning from left to right. So what we will do, see what is there in left. Left there is an operand. So what we will do, we will push that operand on the stack. So यहाँ पे क्या बचता है? 5, 3 plus 9 multiplication plus. Okay. Again next. Next is क्या है next? Again operand. So push it on the stack. So what will remain in here? So 5 को भी पुश किया स्टैक पर. नेक्स्ट नाउ दिस वन इज अगेन ऑपरेंड. पुश इट अगेन ऑन द स्टैक. सो प्लस 9 मल्टीप्लीकेशन प्लस 6 5 what you have to do, pop the two operands from the stack. Operator आया ना, so we have to perform operation. So pop the two operands. Which two operands? This one and this one. Now remaining one thing, this is always operand 2 जो पहले पॉप करोगे. नाउ दिस इज माय टॉप ऑफ द स्टैक. यस. सो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल पॉप टॉप ऑफ द स्टैक. सो दिस टॉप ऑलवेज स्टोर इट इन ऑपरेंड 2 और कंसिडर इट एज सेकेंड ऑपरेंड एंड दिस वन इज ऑपरेंड 1. जब आप ये पॉप करोगे तो आपका टॉप यहाँ पर होगा. देन पॉप दिस. सो योर टॉप विल बी हियर आफ्टर पॉपिंग दिस टू ऑपरेंड्स. Yes, then perform the operation on these two operands. In which way? OP1, this operator, यहाँ पे जो भी operator होगा, that operator and OP2. In this way you have to perform the operation. Instead of plus अगर यहाँ पर minus भी होता तो OP1 minus OP2 ऐसे आप करते. Okay? So now 5 plus 3 रिजल्ट क्या आएगा? 8. यहाँ पे क्या आएगा? 9 मल्टीप्लीकेशन प्लस जो भी इसका रिजल्ट होगा पुश इट बैक ऑन द स्टैक. स्टैक पे क्या है? 6. माय टॉप इज हियर. whenever you want to push something on the stack, increment top first and then push. So now increment the top, push back the result of this operation, that is 8. Okay. Now next, अब क्या है ये? Operand. So push it on the stack. So my stack already consists of 6, 8 and now I am pushing 9 on the stack. What is remaining? Multiplication and plus. Now next operator is multiplication. So perform the multiplication on these two operands. Pop these two operands, perform the operation and then push back the result on stack. So यहाँ पे प्लस रहेगा 9 multiplied by 8, 72 pushed back on the stack. Okay. Now
last content of the expression is plus operator. So again, pop the two operand, perform the operation and push back the result of the given operation. So 72 plus 6 is 78. Yes, and here now expression is null. There is no item and nothing in the expression, so it is null, and stack consists of this. So finally you have to pop the resultant from stack and print it. Got? How to evaluate postfix expression. See this once again. If you have any doubt, you can ask me. Ma'am? Yes. Ma'am, here is it necessary that the operands must be a single digit number? Yes. Couldn't they be like a 62 or like a 2-digit number? Yes. Correct. There is one restriction. What restriction? Every time operands must be single digit operand. Because if you are suppose आपके operands है 2, 12, 20, so वो कैसे accept करोगे 2, 1, 12, 20? कंप्यूटर उसे कैसे accept करेगा 1 by 1 digit? Yes, so it is binding that operands must be single digit operands from 0 to 9. Okay. Anything else? Ma'am, but the result of two operands can be a double digit, right? Like 72 here received from 18 to 9. Can you repeat? Ma'am, as you said that there's a limitation that we have to use a single digit number only. So like here we got 72 as a result of 9 into 8. So the result can be of 2 digit, but the operands can be of 1 digit. Okay. Result can be of 2 or 3 digit. 3 digit तो आएगा ही नहीं. Where as you are accepting only single digit operands, so result ज़्यादा से ज़्यादा 2 digit आएगा. So this result can be 2 digit because result जो भी हो वो complete result हम stack पे push करने वाले. Yes, but यहाँ पर 1 by 1 हम क्या जो भी है item इस expression में जो भी है वो 1 by 1 हम access करने वाले हैं. That's why this can be only single digit. Result may be 2 digit. जो भी रिजल्ट आएगा वो एक वेरिएबल में होगा. वो कंप्लीट रिजल्ट हम पुश कर सकते हैं या कंप्लीट रिजल्ट पॉप कर सकते हैं स्टैक से. यस, ओके मैम. ओके. विल टेक, ये आपने लिखा. विल टेक वन मोर एग्जाम्पल.
Okay. Now the expression is given, which is in the form of character, but we have given values for that character. A is equal to 5, B equals to 6, C equals to 2, D equal to 12, and E equals to 4. So what we have to do, whenever we have this character as an operand, so we'll push its value on the stack. Yes. So first, my stack is empty. Now second, as postfix expression, we'll start from left to scan from left to right. So first is operand, push it on the stack. So remaining is B, C plus multiplication D, E, and this, and it consists of A. Now next is also an operand. So push it on the stack. Remaining is C plus multiplication D, E, division, subtraction. Again next is also operand. Now A push किया. So what is the value of A? 5. So यहाँ पर 5 push किया, not A. So here 5. Then B push किया. What is the value of B? That is 6. So 6. Now this is also an operand. So we will again push it on the stack. The remaining is this. Now 5, 6, and value of C is 2. Okay. Now next is operator. Operation on 6 and 2. So 6 plus 2, 8. Push it back on the stack. Next is also an operator. So perform multiplication on these two operands. So pop the two operands from the stack, perform the operation, and push it back on the stack. So remaining is D, E, division, subtraction. Now multiplication, 8 multiplied by 5, 40. Okay. Next. Now here next is operand. So we will push it on the stack. Value of D is 12. So we'll push 12 on the stack. Remaining is E, division, subtraction. Again next 40, 12. E is also an operand. So we'll push it on the stack. Value of E is 4. So we'll push 4 here. Division and subtraction. Now listen carefully. Next is operator. So we will perform operation. Yes. So now my operand 1 is this. Sorry, operand 2 is this. Operand 1 is this. So what I will do, operand 1 divided by operand 2. Yes. So 12 divided by 4. Yes. So that comes 3. So the result is 3. So push it back on the stack. Now what is there on the stack? Sorry, in expression, operator. So again pop the two operands from the stack. Perform the operation. OP1 40 minus OP2 3. 40 minus 3, that comes to be 37. Push it back on the stack. Now this is null. Pop the final result from the stack and print. Okay? Got? Have you written this? Okay. Now next part is we will see how to write a program for it. Okay.
Okay, now for writing a program, what we will do first? Suppose I will write program using class. So first two instructions of my program is hash include iostream, then namespace using standard. These two instructions are the main instruction. Then my next task is I want to use stack. Now here I will implement stack using array. So first of all, write down the structure for the stack. Yes, means abstract data type of the stack. So हमने क्या लिखा था? Type def struct stack. Yes, struct is the keyword. Name of my structure is stack. Struct is the keyword for structure, and this is the name of my structure, that is stack. Now what is there? Stack is implemented by array. So here int data, इसकी size mention करनी पड़ेगी. So we'll write size. Size नहीं लिखना है, means size लिखो या max लिखो, कुछ भी लिखो. It indicates your size of the array or size of stack. Then in top. Okay, this is the structure defining stack. Now class, suppose name of my class is string. Whatever function you are going to write on the stack, you have to define that functions in stack only. So कौन से functions है हमारे stack पे? Initialize, check empty, checking of whether stack is full, push and pop. So 5 operation we are going to write. जो मैंने आपको पहले बताए थे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था implementation of stack using linked list. Yes, उसके पहले देखा था implementation of stack using array. तो उसमें ये सारे operations हमने देखे थे. Yes. So in public section we'll write all these functions. So void, first कौन सा आएगा function? Void initialize. I'm writing short init. You are going to provide variable of the stack. Stack का structure create किया है. Yes. So whenever you will write the main function, int main, तो वहां पे आप क्या लिखोगे? Suppose मैं यहाँ पर int main लिखती हूँ. So here first of all you will create the variable of the stack. Yes, and that you will pass here. Now initialize करना है means you have to make top -1. That's it. ऐसे लिखते हैं क्या हम? Top? No. How we will write? We are using structure, so we'll write s of top equal to -1. Okay. Next function is empty. It is going to return 0 or 1. That's why return type is integer. Now how you comes to know that stack is empty? If s of top equal to -1, then it is empty. So return 1 else return 0. Okay, ये हो गया आपका empty function. Then दिख रहा है ना ऊपर का भी? Int full. Again
stack pointer S. Now when stack is full, if S of top reaches to the maximum capacity, so we'll check if S of top equal to max minus 1. Yes, if this is true, then return 1, else return 0. Else नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, because if this condition is true, then this will return. Return instruction execute हो गई तो control यहाँ पे नहीं आएगा. And if this condition is false, then this will be executed and control will come back to the main function. Yes, so initialization, checking empty, checking full. Okay, ये कोड मैंने लिख के दिए थे, still I am repeating. Okay, तो मैं ये रब करती हूँ, इसकी जगह पे push and pop लिखती हूँ. Okay, ये तो लिखना ही है, इसके आगे आपको push and pop. So push means nothing you are going to return. So return type is void. Void push. What to push? Item or data. So you have to provide that data also. So stack pointer S comma int x. You want to push this x on the stack. So first क्या करोगे? When you will push, increment the top first. So S of top equal to S of top plus 1. Then next instruction क्या आएगी? Stack पर means array में इस लोकेशन पे आपको डेटा पुश करना है. सो S of डेटा इस एरे में कौन से लोकेशन पे? S of टॉप के लोकेशन पे डेटा पुश करो. सी, अगर आप ये स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हो, विदाउट यूजिंग दिस स्ट्रक्चर यू वांट टू इम्प्लीमेंट द स्टैक, सो आप जस्ट लिख सकते हो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, then data of top equal to x. But now we are implementing stack using array and with the help of this structure. So this structure and the operation that we can perform on this structure combined is called as abstract data type. Why it is called as abstract data type? When I want to access this variable, whether I want to access the value of this variable or I want to push something in this variable, I cannot directly write the instruction. I have to do the operation, whether accessing or assigning the value in function only. Yes, function के बाहर आप कर सकते हो क्या इनको access? No, you have to use functions. ये abstract, this is the advantage of abstract or abstracting. This was the push operation. For pop, what you will do? Suppose यहाँ पर ही मैं short में pop operation लिखती हूँ. Pop operation is going to return you the value that you have popped. That's why return type is int. So int pop, and what you will provide? Only the address of stack or pointer pointing to it. So first thing क्या है आपकी? Copy the data at top of the stack into one variable and then decrement the top. So एक variable लगेगा, so मैं उसे declare करती हूँ. Then I will write x equal to s of data, s of top means copy the data from this array at top pointed by this top. वो x में copy करो. Then decrement the top. S of top equal to S of top minus 1 and then return the value. So return x. So these are the operations that you will perform on the stack, and
all these operation I am writing in public part of my class. After this, I will close the definition of the class. And now my int main function will start. So what I will write in int main? I want to perform evaluation of postfix operation. So for that evaluation, what I have to do? अब ये आपको समझ में आया है? अब इसके अलावा और जो भी ऑपरेशंस होंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू कैलकुलेट द रिजल्ट, बिकॉज इवैल्यूएशन of postfix operation, then I have to evaluate, suppose a plus b, so I have to perform the operation. So that operation I will write the code for that in one function. So I have to write that function in class only. जैसे मैंने ये सारे functions लिखे हैं, in the same way I will write down the remaining function and then I will close the definition of the class. Okay, so now we will see that operation and how to write the code for postfix expression evaluation. Okay, ये समझ में आ गया? Any doubt in this? No doubt. Now we will first of all see the part of main function, and after that उस main function में ये जो है main part में इन functions के अलावा जो भी functions आते हैं, we will see that simultaneously. Okay? So now I will write int main. In that int main, we'll write first of all create object or variable of the structure. Then क्या लिखोगे? You are using OP1, OP2, yes, and character. Now जो भी आपका expression होगा, for example, 1 minute, just I will use one character, for example P, then int OP1 and OP2, then value for storing the result. Okay, then my first task is initialize the stack first, then ask user to enter the expression. Okay, so first of all init क्या करोगे? Now provide the address of the stack. ये हमने variable create किया है, उसका address pass it as an pass it by address. Okay, so now when this instruction will get executed, your stack will get initialized. Now ask user to enter the expression. Yes, so here cout instruction, enter expression. कैसे expression enter करोगे? The expression in single digit. Yes, single digit operand and operator. So वहां पे वैसे mention करो that enter expression in single digit operand and operator. मैं ये short में लिख रही हूँ. Yes, so ये instruction display होने के बाद what will be the next step? Now user will enter the expression. तो हम cin करेंगे क्या? If we want to access one by one digit of the expression, then we have to use here cin and some variable. Okay, but we will use the previous method of accepting, that is while. कौन सी? While x, कौन सा लिया है मैंने? p लिया है कैरेक्टर. Okay, so while p equal to get char.
1 by 1 ये एंटर करेगा एंड दैट इज नॉट इक्वल टू एंटर की. यस, सपोज माई एक्सप्रेशन इज, यहाँ पर लिखती हूँ 5 पोस्ट फिक्स है ना, ओके, 5 प्लस 3 2 मल्टीप्लीकेशन. दिस इज माई एक्सप्रेशन. सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आई विल एंटर 5. ओके, सो 5 जो एंटर होगा वो P में आएगा. अभी वो इक्वल टू स्लैश एन है क्या? नो. एंटर की जब प्रेस करोगे तभी वो स्लैश एन होगा. सो पहले मैंने 5 है तो ये मेरा P पे आ गया. सो परफॉर्म द टास्क ऑन दैट P. अब मेरा फर्स्ट टास्क क्या है, आई हैव टू चेक वेदर P is means this whatever value in P is that is operand or operator. Yes, अगर वो operand है then I will push it on the stack. If it is an operator then I will pop the 2 operands from the stack. So how to check that? For that one function is there called as isDigit. If isDigit X, sorry, isDigit P. मीन्स जो भी यूजर ने एंटर किया है वो P में आया है. तो आप क्या करोगे, यू विल पुश, कॉल द पुश ऑपरेशन. पुश ऑपरेशन में हमने क्या क्या प्रोवाइड किया था, पैरामीटर, stack as well as the value that you want to push on the stack. So address of the stack and P minus 48. जब यूजर 5 कीबोर्ड थ्रू एंटर करेगा सो उस 5 की ASCII एंटर होगी. यस, सो ASCII एंटर होगी तो हमें उस ASCII को 5 में कन्वर्ट करना है. सो उस वैल्यू से 48 सब्ट्रैक्ट करने. व्हेनेवर यू विल सब्ट्रैक्ट 48 देन यू विल गेट 5. यस, सो हियर आई एम डूइंग P minus 48. आफ्टर दैट ASCII का कन्वर्जन हो जाएगा एंड एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज 5. क्योंकि यहाँ पे 5 है सो 5 पुश ऑपरेशन को जाएंगे. नाउ माय स्टैक कंसिस्ट ऑफ 5. यस, सेकेंड वन क्या है, जस्ट मिनट, पोस्ट फिक्स है सो आई हैव टू राइट 532. Yes. Now next, user next enter करेगा 3. Again it will be available in P. Check करो, is digit है? Yes. Push it on the stack. Next, user enter करेगा 2. 2 is also a digit. So again push it on the stack. Yes. Now next, user will enter multiplication. So it is not a digit, or means it is not an operand. So as it is operator, we have to do something else. So come in the else part. In else part, what you have to do? Pop 2 operands from the stack. पहला जो होगा वो होगा operand 2. So operand 2 equals to pop stack. Pop function कॉल किया. Yes, pop function को हम stack प्रोवाइड करते हैं. मैम बोर्ड बीच बीच में ब्लर हो रहा है. ओके, बट आई एम इवन द बोर्ड इज नॉट कंप्लीटली विजिबल. आई एम सेइंग व्हाट आई एम राइटिंग. यस, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. OP2 इक्वल्स टू पॉप स्टैक, पॉप एड्रेस ऑफ द स्टैक. पॉप फंक्शन हमने कैसे लिखा था, इंट पॉप एंड स्टैक. यस, सो ये प्रोवाइड किया. अब इसमें हमने क्या किया था, वी हैव यूज्ड वन वेरिएबल, सपोज इंट x. x इक्वल्स टू s ऑफ डेटा, s ऑफ टॉप. ओके, सो स्टैक टॉप जो है वो x में आएगा. यस, सो x में क्या आ गया, स्टैक टॉप है 2. आफ्टर
doing this. Last instruction of pop operation or pop function is return that. So this 2 will be returned by this pop function. Screen black है, दिख रही है हाँ, अभी? No, ma'am, the board is not visible yet. डर दिख रहा है क्या बोर्ड? मैम स्क्रीन और ब्लैंक ही हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है. मैं भी नहीं दिख रही हूँ. जस्ट अ मिनट. अब देखो. हाँ मैम, अभी यस. दिख रहा है? ओके, अगर ऐसा कुछ हो ना तो बताया करो मुझे. ओके, सो नाउ सी, ये इफ वाला पार्ट समझ में आ गया? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes. Now else part. Yes. Else part. Now user will enter this operator. Yes. As it is not digit, तो ये condition false हो जाएगी. So we come in else part. Now else में क्या करना है? If the user has entered operator, pop the 2 operands from the stack. That's why op2 equal to pop stack. Call the pop function here. This is function call to pop function. Yes. So this function will return the value that is popped. हमारे केस में क्या रिटर्न होगा? 2. So op2 is assigned value 2. Then op1 equals to pop stack. Again, next operand 3 will be popped from the stack and assigned to variable op1. Yes. Now I have 2 operands. So what I have to do? Now I have to perform the operation. So I will write value equal to, evaluate करूंगी मैं, और I will write one function evaluate. This is called to the evaluate function. Yes, evaluate operator operand 1 operand 2. 3 पैरामीटर पास किए मैंने इवेल्युएट फंक्शन को. ओके, सो कॉल टू द इवेल्युएट फंक्शन रिटर्न्स मी द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन. सो मैंने पॉप किए हैं 2 and 3. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, पी में है मेरा मल्टीप्लीकेशन. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कम्स टू बी 6. सो माय वैल्यू वेरिएबल कम्स 6. नाउ आई वांट टू पुश इट बैक ऑन द स्टैक. सो विल कॉल द पुश फंक्शन. पुश first parameter is the stack and second parameter the value that I want to push. Yes. So होगा क्या? 5 and 6 push होगा. Okay. Same thing. अब ये हो गया तो यहाँ पर while का ब्रैकेट क्लोज कर दो. सॉरी, पहले else का आएगा, मैंने else को ब्रैकेट नहीं डाला. एंड देन वाइल का. ओके, मीन्स ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ. व्हाट इज फर्स्ट पैरामीटर ऑफ इवेल्युएट? इवेल्युएट का फर्स्ट पैरामीटर है पी. पी क्या है? पी इक्वल्स टू गेट क्या, जो यूजर एंटर करने वाला है, दैट इज पी. वो हम चेक कर रहे हैं. इफ इट इज डिजिट मीन्स वो ऑपरेंड है, डिजिट है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना 532, तो 5 डिजिट है कि नहीं? यस. अगर वो डिजिट है मीन्स इट इज एन ऑपरेंड. सो उसे पुश करो. अगर डिजिट नहीं है तो स्टैक से 2 ऑपरेंड पॉप करो, परफॉर्म द ऑपरेशन. सो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए op1 कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड, op2 कंसिस्ट ऑफ सेकेंड ऑपरेंड एंड दिस p कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर जो यूजर ने एंटर किया है. देन परफॉर्म ऑपरेशन एंड पुश बैक रिजल्ट ऑन द स्टैक. हाउ विल इवैल्यूएट? नो, इफ वी हैव, यस, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. सो ये पार्ट समझ में आ गया? यस. नाउ सपोज मेरा कंप्लीट हो चुका है. यस. जब मेरा पूरा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो जाएगा तो लास्ट में रिजल्ट किस में आएगा? रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन स्टैक ओनली बिकॉज आई एम पुशिंग रिजल्ट बैक टू द स्टैक. सो फाइनल रिजल्ट भी स्टैक में मिलेगा. सो आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू? पॉप द स्टैक and copy the value in value variable or final result. So pop stack.
फाइनल रिजल्ट मिलेगा मुझे वैल्यू वेरिएबल में, जिसे आप डिस्प्ले करो. सी आउट evaluation is value. So ये डिस्प्ले हो जाएगा. Then return 0 लिखो. Your program finish. Just first of all tell me whether you got this. Here we are not considering ABC as input. No, we are directly considering digits. Yes, अगर आप ABC कंसिडर करने वाले हो तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोग्राम अलग होगा. Yes, in that case क्या करना होगा, आपको चेक करना पड़ेगा इस डिजिट के जगह पे आपको कैरेक्टर है क्या चेक करना पड़ेगा. और अगर कैरेक्टर है तो आपको यूजर से उसकी वैल्यू पूछनी पड़ेगी. सी आउट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा एंड यू हैव टू आस्क यूजर एंटर द वैल्यू फॉर दिस. अगर ए दबाया है, यूजर ने ए एंटर किया है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. तो यूजर उसकी वैल्यू भी आपको देगा, वो भी आपको यूजर से लेनी है. यस, तो दो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बढ़ेंगे. वो वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करने के बाद आपको पुश करनी पड़ेगी. ओके, नाउ विल सी द फंक्शन. कौन सा, ये समझ में आ गया ये पार्ट? हैव यू कॉपीड दिस? यस, नाउ विल सी इवैल्यूएशन फंक्शन. यहां पर हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हुआ. जस्ट इवैल्यूएशन फंक्शन बचा है जो हम स्टैक में क्लास में लिखेंगे, जहां पे 5 फंक्शंस लिखे हैं वहां पर. नाउ इवैल्यूएट फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न यू समथिंग, सो रिटर्न टाइप इज इंट. अब हम पास करने वाले हैं 3 पैरामीटर, कैरेक्टर x, then int op1, int op2. So 3 parameters we are going to pass. जो यहाँ पे मैंने p में पास किया है वो x में कॉपी किया है यहाँ पे. ओके, नाउ चेक if x is equal to प्लस अगर है तो आपको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न op1 plus op2. If x is equal to subtraction, then return op1 minus op2. Yes, if x is equal to multiplication, then return op1 multiplied by op2. वैसे ही नीचे क्या आएगा, if x is equal to division, then return op1 divided by op2. Means all these conditions will be checked and according to that result will be generated and returned to main function. So this is the function that you have to write in class definition. Got how to write a program for evaluating postfix expression. Here ternary conditional operator can be used, right? Ternary conditional operator. Can you explain me, Veena? Yes, ma'am, that if A or B condition is checked, then some result in question mark that expression. कर सकते हो, but what you have to do, first of all, try to execute this program. If it is working, then try for that also. So instead of this, जैसे आपने अभी बोला वैसे try करके देखो. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Here I will explain you, but whenever you will try yourself at the time of execution, तो आपको ज्यादा वो याद रहता है. आप खुद उसे ट्राई करते हो और एग्जीक्यूट करके देखते हो. सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और लॉन्ग लास्टिंग रिमेम्बर मीन्स आपके मेमोरी में रहता है फिर. सो ऑल ऑफ यू गॉट हाउ टू राइट द प्रोग्राम. नाउ is there any doubt understanding how to write a code for implementing stack using array?
सब हो गया. फंक्शंस स्टैक के सारे हो गए, पुश, पॉप, एम्प्टी, फुल एंड लॉजिक फॉर एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन. सो हाउ टू अप्लाई स्टैक ये भी समझ में आ गया. नाउ ऑल ऑफ यू गॉट. ओके. Yes, सो ma'am. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इवैल्यूएशन. अभी हमें 6-7 लेक्चर्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन एंड एक्सप्रेशन कन्वर्जन में ही करने हैं. ओके. घर पे एक काम करो, ट्राई टू टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और उसे सॉल्व करने का ट्राई करो. ओके. नाउ आई एम लीविंग. यू वांट टू राइट दिस. लिखा है ये आपने. दिस कोड मस्ट बी अवेलेबल इन योर नोटबुक बिकॉज आपको इन सारे जो है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन हो या फिर एक्सप्रेशन कन्वर्जन, देयर आर 2 assignments on that. So we'll decide which assignment we can take. Practical assignment. Okay. I will circulate the attendance on WhatsApp group. Okay. Chalo. Bye.